Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will going to start the lecture number 12, unit number 1, the human body, and the topic is the human muscles. The human body has more than 600 muscles. It helps us to move. It also helps to move things around your body. Muscles work by the contracting and the relaxing. Muscles work by the contracting and relaxing. Some muscles uh, can control their movements, and some muscles are cannot control their movements. For example, your foot muscles are the voluntary muscles. When you wave to someone or kick a football, so it can move by yourself. Some muscles are also present in your digestive system that can be contract and expand to help your digest your food. Uh, in your eyes, some muscles are present in the eyes that control the size of the eyes pupil, depending on how bright it is. Your heart is muscles known as the heart muscles is also known as the cardiac muscle होते हैं, जो कि it is an involuntary muscle, जो कि अपनी मर्जी से मूव नहीं करते, that cannot be moved by their selves, that pumps the blood around your body. That muscles work by the contracting and relaxing process. This is a table diagram of the human muscles, that is show the muscles contracting and the relaxing process. In contracting means they are the shoulders. When you bend out your arms, it become the contracting muscles, and they get shoulders, and relaxing makes them longer, and they move in the way that they move the body. The arm muscles are the voluntary muscles that can be moved and control their movements. They now want to contract and want to relax because they receive messages from the brain telling them what to do. जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारी बॉडी जो होती है, हमारे जो आर्म्स के जो होते हैं सेल्स, उनको मैसेज सेंड करते हैं कि हमें अब क्या करना है, ये हमें बताता है ब्रेन. तो उसके बाद हम अपना बाजू को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. जब हम अपने बाजू को इकट्ठा करेंगे तो हमारे मसल छोटे हो जाते हैं साइज़ में, और जब हम इसको बाजू को खोलते हैं तो हमारे मसल जो हैं वो साइज़ में लॉन्ग हो जाते हैं. तो ये जो प्रोसेस होता है वो कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग का जो वर्क हो रहा होता है मसल्स के अंदर. कुछ वॉलेंट्री मसल्स होते हैं जो दैट कैन बी मूवमेंट, दैट कैन बी कंट्रोल देयर मूवमेंट्स, एंड सम जो मसल्स होते हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं दैट कैन नॉट बी कंट्रोल देयर मूवमेंट्स. Student is all about the muscle system that enable the body to move. There are the more than 600 muscles in your body. They are the relaxing. Muscles work by the contracting and the relaxing process. Some muscles can be control their movement. These are the voluntary muscles, and some muscles cannot be control their movement. These are the involuntary muscles. Heart is a muscle known as a cardiac muscles होते हैं. It is an involuntary muscle that cannot be control their movements, and the heart that pumps the blood around your body. When your arm muscles contracting means that they get shorter. When their arm muscles relaxing makes them longer as they move in this way, that the way and they move their body. Student, this is all about the unit number 1, the human body, in which we study about the human brain, heart, lungs, intestine and the muscles. So here is unit number 1 is completed. सो अब हम अपना जो समर वेकेशंस का वर्क है वो कंप्लीट आउट करेंगे. ये जो आपको लेक्चर्स दिए गए हैं ऑनलाइन क्लासेस, इसके ज़रिए हम अपना लेक्चर्स कंप्लीट करें, और जो साथ साथ आपको लेबल डायग्राम्स दिखाई गई, शो की गई, उनको लेबल्स करें साथ साथ, और अपने नोटबुक पे नोट डाउन करें. इसी तरह से यूनिट नंबर 1 और उसके साथ साथ आपने चैप्टर यूनिट का नेम लिखना है, द ह्यूमन बॉडी, और टॉपिक्स वाइज जितने भी आपको लेक्चर्स दिए गए हैं उनके क्वेश्चंस जो हैं आपको बुक में अवेलेबल हैं, और उसके आंसर जो सॉल्यूशंस हैं आपको जो सिलेबस दिया गया है मार्च का, अप्रैल का, उनके साथ साथ आपको सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं पेज वाइज. यहाँ पे देखिए आपको यूनिट नंबर 1 के सॉल्यूशंस दिए गए हैं, आंसर इन योर नोटबुक, जो पेज नंबर हैं पेज नंबर वाइज. यहाँ पे पेज नंबर 5, पेज नंबर 9, 10, 11, इस तरह से आपको सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. आपके सिलेबस में क्वेश्चन आप बुक से देखेंगे, और आंसर जो है आपने सॉल्यूशन जो है आपने अपने सिलेबस से देख के आपने अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करने हैं. जो क्वेश्चंस हैं आपको, और जो चीज़ की समझ नहीं आती आप लेक्चर्स को खोलें, वहाँ से पढ़ें, वहाँ से सुने.
तो ये जो आपको ऑनलाइन क्लासेस दी गई हैं, यहाँ से आपने अपने जो वोकेशंस का वर्क है वो कंप्लीट करना है साथ साथ, और यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 1 जो है वो क्लोजिंग होता है।